बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जॉब्स शेयर करूँगी जो कि आई थी डॉन संडे मई 12, 2024 की अखबार में। करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइन विद आवर स्ट्रेटजी द बैंक इज़ लुकिंग फॉर टैलेंटेड, डेडिकेटेड and experienced professionals for the following positions in the area of risk management, information security based at Karachi. The individuals who fulfill the below basic eligibility criteria may apply for the following positions. Number 1 position / job title: Wing Head - Information Security Operations and Threat Management VP / SVP. Reporting to Chief Information Security Officer. Educational / professional qualification: minimum graduation or equivalent from a local or international university / college / institute recognized by the HEC. Candidate having bachelor's or master's degree in computer science / information systems / information technology / technology engineering or any other relevant professional certifications will be preferred. Experience: minimum 10 years of experience in information technology and / or information security, out of which 4 years in information security operations / monitoring and / or threat management. Candidate having relevant working experience in banking or large scale organization will be preferred. Other skills / expertise / knowledge required, ये आप लोग देख लीजिएगा, साउंड नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसके बाद आउटलाइन ऑफ मेन ड्यूटीज़ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये है। अच्छा जी, पोजीशन नंबर 2 है पोजीशन / जॉब टाइटल: डिपार्टमेंट हेड -IS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस AVP / VP। रिपोर्टिंग टू विंग हेड -IS प्रोग्राम मैनेजमेंट। एजुकेशनल / प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन: मिनिमम ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ लोकल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी / college / institute recognized by the HEC. Candidate having bachelor's or master's in computer science / information systems / information technology / technology engineering or any other relevant professional certifications will be preferred. Experience: minimum 6 years of experience in information technology and / or information security, out of which 3 years in managing information security projects. Candidate having relevant working experience in banking or large scale organization will be preferred. Other skills / expertise / knowledge required: जनरल नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये आप देख लीजिएगा। आउटलाइन ऑफ मेन ड्यूटीज / रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसका भी आप लोग ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है जी। उसके बाद फिर तीसरी पोजीशन है पोजीशन / जॉब टाइटल: डिपार्टमेंट हेड IS डिजिटल चैनल्स AVP / VP। रिपोर्टिंग टू विंग हेड IS रिस्क मैनेजमेंट। एजुकेशनल / प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन: मिनिमम ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ लोकल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी / college / institute recognized by the HEC. Candidate having bachelor's or master's in computer science / information systems / information technology / technology engineering or any other relevant professional certifications will be preferred. Experience: minimum 6 years of experience in IT, information security or IT audit, out of which at least 3 years in application and / or project security / assessment. Candidate having relevant working experience in banking or large scale organization will be preferred. Other skills / expertise / knowledge required, ये देख लीजिएगा आप लोग। आउटलाइन ऑफ मेन ड्यूटीज / रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देख लीजिएगा। चौथी पोजीशन है पोजीशन / जॉब टाइटल, ये है सिक्योरिटी इंसिडेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट SIEM engineer OG1 / AVP। Reporting to team lead security operations center SOC engineering. Educational / professional qualification: minimum graduation or equivalent from a local or international university / college / institute recognized by the HEC. Candidate having bachelor's or master's in computer science / information systems /
information technology slash technology engineering or any other relevant professional certifications will be preferred. Experienced minimum 4 years of experience in information technology and slash or information security, out of which 2 years in information security operations or related areas. Other skills slash expertise slash knowledge required. गुड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फंक्शन, ये आप लोग देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है जी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह हैं। अच्छा जी, 5वीं पोजीशन है पोजीशन स्लैश जॉब टाइटल ऑफिसर इंटरनेट एप्लीकेशन सिक्योरिटी रिव्यू OG2 स्लैश OG1 रिपोर्टिंग टू विंग हेड IS रिस्क स्लैश IS ऑपरेशंस एंड थ्रेट मैनेजमेंट। Education slash professional qualification minimum graduation or equivalent from a local or international university slash college slash institute recognized by the HEC candidate having bachelor's or master's in computer science slash information system slash information technology slash technology engineering or any other relevant professional certifications will be preferred. Experience minimum 2 years of experience in information technology and slash or information security, preferable in relevant area of internet application security review. Other skills slash expertise slash knowledge required. Understanding of information, ये आप लोग देख लीजिएगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है जी। उसके बाद है अदर आउटलाइन ऑफ मेन ड्यूटी स्लैश रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये भी यहाँ पर ख़त्म है। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 6 पोजीशन स्लैश जॉब टाइटल कार्ड सिक्योरिटी ऑफिसर OG2 स्लैश OG1 रिपोर्टिंग टू डिपार्टमेंट हेड -IS डिजिटल चैनल्स एजुकेशन स्लैश प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ लोकल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्लैश कॉलेज स्लैश इंस्टीट्यूट रिकग्नाइज्ड बाय द HEC कैंडिडेट हैविंग बैचलर्स और मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस स्लैश इंफॉर्मेशन सिस्टम स्लैश information technology slash technology engineering or any other relevant professional certifications will be preferred. Experience minimum 2 years of experience in information technology and slash or information security, preferably in relevant area of card security, having experience of implementing PCI-DSS controls in a financial institution will be an added preference. Other skills slash expertise slash knowledge required. Understanding of information security function, outline of main duties slash responsibilities, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। टू एग्जीक्यूट रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम फॉर बैंक वाइड डिजिटल। नंबर 7 पोजीशन स्लैश जॉब टाइटल नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिस्ट OG2 स्लैश OG1 रिपोर्टिंग टू डिपार्टमेंट हेड नेटवर्क सिक्योरिटी। Education slash professional qualification minimum graduation or equivalent from a local or international university slash college slash institute recognized by the HEC candidate having bachelor's or master's in computer science slash information system slash information technology slash technology engineering or any other relevant professional certifications will be preferred. Experience minimum 3 years of experience in information technology and slash or information security, preferably in network security management and slash or assessment. Other skills slash expertise slash knowledge required. Understanding of information security function, good interpersonal skills, outline of main duties slash responsibilities, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, assessment test slash interviews, only shortlisted candidates strictly meeting the above mentioned basic eligibility criteria will be invited for test and slash or panel interviews. Employment type, the employment will be on contractual basis for 3 years which may be renewed on discretion of the management. Selected candidates will be offered compensation package and other benefits as per bank's policy slash rules. Interested candidates may visit the website www.siddharthhaider.com.pk/careers and apply online within 10 working days from the date of application of this advertisement as per given instructions. 12th May 2024 is the publication date.
Applications received after due date will not be considered in any case. Not EA/DA will be admissible for test/interview. We are an equal opportunity employer. Women, minorities and differently abled persons are encouraged to apply. अच्छा जी, एक और जॉब है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की. इन लाइन विद आर स्ट्रेटेजी द बैंक इज़ लुकिंग फॉर टैलेंटेड, डेडिकेटेड एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स फॉर द फॉलोइंग पोजीशन in the area of financial control based at Karachi. The individuals who fulfill the below basic eligibility criteria may apply for the following position. Number 1 position / job title: Finance and Accounting Officer OG2/OG1, reporting to Wing Head Finance. Educational / professional qualification: minimum graduation or equivalent from a local or international university / college / institute recognized by the HEC. Candidates having master's degree and/or any other relevant professional qualification such as CA, Inter/ACCA/ACMA will be preferred. Experience: minimum 3 years of experience in finance and/or accounts, preferably in a financial institution. Other skills / expertise / knowledge required: गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल एक्यूमेन. ये सब आप लोग देख लीजिएगा. आउटलाइन ऑफ मेन ड्यूटीज / रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा. और असेसमेंट टेस्ट / इंटरव्यू: ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स स्ट्रिक्टली मीटिंग द अबव मेंशन्ड बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी इन्वाइटेड फॉर टेस्ट एंड / पैनल इंटरव्यूज़. Employment type: the employment will be on contractual basis for 3 years, which may be renewed on discretion of the management. Selected candidates will be offered compensation package and other benefits as per bank's policies / rules. Interested candidates may visit the website www.siddharthhaider.com.pk/careers and apply online within 10 working days from the date of publication of this advertisement as per given instructions. Applications received after due date will not be considered in any case. Not EA/DA will be admissible for test/interview. We are an equal opportunity employer. Women, minorities and differently abled persons are encouraged to apply. तो जी, ये तो थी मेरी आज की वीडियो. अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. इस वीडियो के लिए इतना ही. अल्लाह हाफ़िज़.